दर्शकवृन्द नमस्कार। केटिभी न्युजमा यहाँहरूलाई म स्वागत जनाउँछु। म उमेश परियार। यहाँहरूलाई थाहा भएको कुरो हो, पश्चिम बङ्गालमा पञ्चायत चुनाव घोषणा भइसकेको छ। यस वर्ष दार्जिलिङ पहाडमा लगभग 22-23 वर्षको अन्तरालमा 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाव हुन गइरहेको छ। हजुर, हिजोबाट नामाङ्कन भर्ने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ भने आज जिल्ला प्रशासनले अल पार्टी मिटिङ बोलाएको छ। अनि अहिले म छु ट्रेजरी भवन अघिल्तिर, जहाँ अल पार्टीका विभिन्न प्रतिनिधिहरू आइपुगेका छन् र अहिले सभा बैठक सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि हामी गरी यस चुनावको रूपरेखा, यस चुनावको सुरक्षालाई लिएर अनि चुनावको प्रक्रियाबारे हामी जिल्ला प्रशासनसित पनि कुराकानी गर्नेछौँ। अनि अहिले कालेबुङ जिल्लापाल आर बिमला आइएएस, त्यसरी नै कालेबुङ जिल्ला पुलिस अधीक्षक आइपिएस अपराजिता राई अनि अल पार्टीका प्रतिनिधिहरू अनि अन्य अधिकारीहरूलाई लिएर यो सभा सम्पन्न भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि पहाडमा यस वर्ष भइरहेको यस 2 स्तरीय पञ्चायत चुनावलाई लिएर धेरै समय अघिदेखि नै वाद विवाद चल्दै आइरहेको थियो, चर्चा परिचर्चा हुँदै आइरहेको थियो। यस वर्ष पञ्चायत चुनाव हुने कुरा थियो, तर एउटा जुन निश्चित भने थिएन। तर तत्कालीन जो आपतकालीन राज्य सरकारको आपतकालीन यो घोषणाले कति राजनैतिक दलहरू यो घोषणाको विरुद्धमा छन् अनि आपत्ति जनाइरहेका छन्। हिजो मात्र हामीले तपाईहरु समक्ष भाजपाका जिल्ला अध्यक्ष कल्याण देवनको जुन बयान हामी तपाईहरु समक्ष अघि राख्यौं अनि त्यसरी नै अन्य राजनैतिक दलका बाट पनि जुन यो घोषणाको उहाँहरू असन्तुष्टि जाहेर गरिरहेका छन् भने कतिजना या सन्तुष्ट पनि छन्। हामी यही कुराहरू लिएर तपाईहरु समक्ष अघि राख्नेछौँ। केटिभी समाचारका सरप्राइजक रकवेल म्यानेजमेन्ट कलेज कालिम्पोङ. Admission open for hotel management, BVA and travel tourism. The only college in the hills affiliated to Macaut WBUT. Sri Sai Tire Zone, an exclusive MRF Tire showroom. स्कुटी देखि सबै गाडी अनि जेसीबी को टायर अब कम्पनीकै दाममा कालेबुङमा उपलब्ध. हिमालयन शॉपी एन्ड एक्सक्लुसिभ इलेक्ट्रोनिक शोरूम, जहाँ हाल चलिरहेछ मेगा समर सेल, जसको नयाँ ब्रान्च खोलिएको छ कालिम्पोङ मोटर स्ट्यान्ड नजिक. आकाश पब्लिक सर्भिस कोअपरेटिभ सोसाइटी लिमिटेड कालिम्पोङ अनि डेकोर फर्निचर एन्ड एक्सक्लुसिभ फर्निचर शोरूम इन कालिम्पोङ. As per the notification of Election Commission, Kalimpong में 2 tier पंचायत इलेक्शन होने वाला है. इसका नॉमिनेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है. सिंस yesterday, that is 9th जून से नॉमिनेशन शुरू हो चुका है. अप टू 15th तक, except Sunday, the nomination will be taken by the BDOs, that is पंचायत रिटर्निंग ऑफिसर्स in their office. हम लोगों का नॉमिनेशन टाइम will be 11 AM to 3 PM तक होगा. The scrutiny of the nominations done will be on 17th June. Last day of withdrawal will be 20th June. Date of poll will be 8th July. Poll time will be from 7 AM to 5 PM. हम लोगों का ECI का इलेक्ट्रल रोल विच वॉज पब्लिश्ड ऑन 1 जनवरी 2023, उसको ही हम लोग अडॉप्ट करते हैं. बैलेट पेपर में इलेक्शन होगा. इलेक्शन वोटिंग के लिए वोटर्स शुड कम विद एपिक कार्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट एपिक कार्ड, सम ऑफ द फोटो ID कार्ड्स आर आल्सो एक्सेप्टेड फॉर गिविंग देयर वोट्स. आधार कार्ड, MGNREGS कार्ड, बैंक, पोस्ट ऑफिस पासबुक, हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, passport, pension document, any service identity proof, government identity card, SC/ST OBC caste certificates, freedom fighter identity card, arms license, disability certificate, ECI card. These are some of the other documents which are accepted in case if there is any absence of EPIC card with them. MCC ऑलरेडी चालू हो चुका है. हम लोगों का वोटर इन रूरल एरिया इज 1,75,932. इसमें मेल पॉपुलेशन है, आई मीन वोटर पॉपुलेशन इज 87,492. फीमेल वोटर पॉपुलेशन इज 88,440.
हम लोगों का 4 पंचायत समिति है. आफ्टर द बाइफर्केशन ऑफ कलिम्पोंग, 2 block, Lava and Pedong becomes 2 different panchayat samitis. Now we have 42 gram panchayats, under which 260 gram panchayat constituency hai. Some of the constituencies are having double membership. So total number of seats will be 280 under gram panchayats. For panchayat samiti 76 seats hoga. हम लोगों को पोलिंग स्टेशन 263, इसमें सिंगल पोलिंग स्टेशन विल बी इन 198 premises. In 46 premises में 2 double polling stations will be there. In 8 premises में 3 polling station will be there. In only 1 polling premise में 4 polling station है. Otherwise everything is kept intact. हम लोगों को वोटर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. Even after bifurcating as per GP constituencies, we have kept as far as possible within the same premise ये polling booth हम लोग रखा है. Today we had a meeting with the political parties from the end of the DM and SP. Whatever be the instructions given by the election commission that has been communicated, we have sought full cooperation from them and we expect the full cooperation from all the political parties as well as all the candidates. टोटल बूथ में सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था होगा, सिक्योरिटी के लिए बुथहरूमा अरू इलेक्सनमा भएको जस्तै एउटा स्केल अफ डिप्लोयमेन्ट आउँछ इलेक्सन कमिसनकोबाट. त्यो स्केल अफ डिप्लोयमेन्टको अनुसार त्यहाँनिर फोर्सलाई डिप्लोयमेन्ट हुन्छ. यो अलावा हाम्रो सेक्टर मोबाइलहरू पनि हुन्छ, HRFS हुन्छ, त्यो RT मोबाइलहरू हुन्छ जो चाहिँ मोबाइल भएर सबै एरियामा घुमिरहन्छ. हाम्रो एरिया डोमिनेसन एक्सर्साइज जो रुट मार्चहरू हिजोदेखि सबै थानाहरूमा सुरु भएको छ र बाहिरबाट अझै फोर्स आएपछि त्यो अझै स्ट्रङ हुनेछ. मैडम डे बाई डे अपडेट के लिए कुछ व्यवस्था किया है आपने? डेफिनेटली INCA का ग्रुप है, उसमें एवरीडे नॉमिनेशन ऑलरेडी हम लोग पोस्टिंग शुरू कर लिया एंड कंटिन्यूअसली थ्रू DICO वी विल बी अपडेटिंग यू. मैडम ग्राम पञ्चायत एरियामा पनि त्यस्तो सेन्सिटिभ बुथहरू तपाईँले त्यस्तो कुनै फर्चुनेटली यहाँको कालिम्पोङे जनताहरू र यहाँको पोलिटिकल पार्टीहरूको सहयोगताले गर्दाखेरि कालिम्पोङमा त्यस्तो खालको दागी कुनै पनि हाम्रो मिन्स अरू डिस्ट्रिक्ट्सहरूलाई हेरी त्यस्तो खालको सेन्सिटिभ बुथ्स, हाइपर सेन्सिटिभ बुथ्सहरू हाम्रो यहाँनिर छैन. तर पनि जहाँ पनि हाम्रो अलिकति कम्प्लेन्ट पाउँछौँ र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बेसी एक्टिभिटी हाम्रो DIB को अनुसार या हाम्रो लोकल इन्फर्मेसनको अनुसार पाउँछौँ, त्यहाँनिर निगरानी राख्नुहुन्छ. जैसे जो तोले तांता वगैरह उसके कोई ऐसे डिपार्टमेंट की तरफ से आगे प्रक्रिया कैसे रहेगा? आई मीन प्रीवियसली लॉन्ग बैक P-2 से ही हम लोगों को पोलिंग पार्टी को मूव करना पड़ा था, बट सिंस लास्ट 2 elections we have seen the connectivity has improved, so we have no problem. And another point is now the elections are conducted at the block level, I mean panchayat samiti level. Panchayat returning officers will be having this DCRC. So from Kalimpong से हम लोगों को मूव करने में बहुत टाइम लगा था, that has to be calculated, but now गोरुबतन से ही पोलिंग पार्टी मूव करेगा, so that will not take much time. ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के टाइम में मेन पॉलिटिकल पार्टियों को क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होगा, क्या क्या करना होगा, क्या क्या नहीं करना होगा? As usual, generally all the elections will be having similar kind of model code of conduct. उन लोगों का कितने बजे से कितने बजे तक माइक यूज़ करना है, प्रोसेशन करने के लिए एंड अदर परमिशंस फ्रॉम SP उन लोगों का लेना पड़ेगा as usual.